नमस्ते, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम कुछ जो माइनर प्राणायाम होते हैं, ऑल्दो वो एडवांस में आते हैं, बट दीज आर सम प्राणायाम दैट यू कैन डू, वो हम थोड़ा साथ में प्रैक्टिस करेंगे आज। हाउएवर जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत मेजर और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है जो सिर्फ हमें तब करना चाहिए जब हमारे पास कांस्टेंट गाइडेंस हो या फिर हम किसी आश्रम में हो वेरिन हमारे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर एनर्जी एंड जो एनवायरनमेंट होता है जिसका रोल प्ले होता है उसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। So there are some pranayam that you should not do at home without any guidance, and especially if you are not in the right place, where if you have polluted air or the place around you, the people around you, वो अगर काम नहीं है, then you should not practice. So we will not be practicing Bhastrika, but I will be definitely telling you how Bhastrika is done, so that अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन है तो आप उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसके लिए करेक्ट तरीका क्या होता है। करने की अभी आप फिर भी जरूरत नहीं है, बट इफ देयर इज एनीवन हु इज परफॉर्मिंग एट लीस्ट दे शुड बी एबल टू करेक्ट इट, राइट। तो ये समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम भस्त्रिका की बात करते हैं सबसे पहली बात उसके लिए ये है दैट यू शुड बी एबल टू प्रैक्टिस कपालभाति वेरी वेल। अगर आप कपालभाति अच्छे से आपकी 70-80 पंपिंग्स 3 टाइम्स अच्छे से हो पा रही हैं, if you are able to do even अनुलोम विलोम, उसके वो जो आपके जो राउंड्स होते हैं वो जो 8 काउंट्स के प्रॉपर राउंड्स होते हैं where you have नाड़ी शोधन, नाड़ी प्यूरिफिकेशन and all of that, अगर आप सही से उसे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं only then we go for advanced pranayam. We don't do it before that because it can take out, there are energies and there are things that go on within us that we may not be aware of. And वो निकल के आ सकती हैं. If you are not prepared enough, it may not have a good effect on you. And not everyone is ready for big challenges which may be very tough, painful or hard. It may even look like a disease. And to be able to reach there, you should have purified your mind and body at a very basic level, on a good level. So उसे करने के लिए, advanced प्राणायाम करने के लिए आपको basic purification of mind and body करना जरूरी है and फिर ही आपको करना चाहिए। इसीलिए भस्त्रिका वैसे भी आप करने से पहले आपकी कपालभाति आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसकी पंपिंग्स आपको इंक्रीज करनी है एंड आप धीरे धीरे उसकी स्पीड भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। सो इफ यू आर गुड एट कपालभाति और वेरी वेरी गुड एट कपालभाति एंड इवन अनुलोम विलोम, यू आर एबल टू रिटेन योर ब्रेथ properly and very well, only then you should think of anything like even Bhastrika. तो भस्त्रिका में वैसे अगर आप कोई भी किसी को करते देखेंगे, so first of all it is great if you can sit in Padmasana. Sitting in a meditative pose, it is basically where you have to inhale and exhale fully using all your muscles from your diaphragm. It is basically a yogic breathing which is fast, right? So it will go like and it will be fast. तो ये आपका नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा, आपका हेड नेक और बैक स्ट्रेट रहेगा और वो फोर्सफुल ब्रीदिंग इन और आउट होती है एंड पूरे जो आपके डायफ्राम को यूज करते हुए होती है। सो इन दिस केस यू शुड ऑल्सो बी एबल टू प्रैक्टिस एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आपको जो एब्डोमिनल या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, जो आपके पेट से हम जो कहते हैं कि जो हमारी ब्रीदिंग होती है जो हेल्दी तरीके से होती है, वो आपको अच्छे से करना है, फिर ही आप जो है भस्त्रिका को और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसके लिए हम भस्त्रिका में आगे जाके बंधास और जो हम रिटेंशन है वो भी इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से जो आप अगर अदरवाइज देख रहे हैं तो वो प्रॉपर वैसे भी भस्त्रिका नहीं है, क्योंकि उसमें हम अपना रिटेंशन रखते हैं, हम बंधास अप्लाई करते हैं और उस तरीके से हमारी एनर्जी जो प्राण और अपान है उसको हम सही डायरेक्शन में पहुंचा पाते हैं। इसमें हमें बहुत कंट्रोल चाहिए होता है मेंटल एंड अपनी खुद की बॉडी पे। उसकी वजह से हमें हमारे आसन, हमारे बेसिक प्राणायाम बहुत अच्छे से किए होने चाहिए टू बी एबल टू रीच दैट, राइट। सो ये है थोड़ा सा आपको बेसिक सा आपको भस्त्रिका के बारे में बताया। इसमें ऑब्वियसली बहुत और वेरिएशंस होते हैं, इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। भस्त्रिका में बैठना नॉर्मली रहता है और आपकी बस ऐसे करके जो एक्सलेशन इनहेलेशन चलती है वो आपकी चलेगी नॉर्मल,
एंड आप उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। पर अगेन ये तभी जब आपने अपनी बेसिक प्राणायाम अच्छे से करें। तो जब हम शीतली और शीतकारी ये माइनर प्राणायाम होते हैं, हाउएवर ये भी एडवांस प्राणायाम होते हैं, ये हम जरूर अभी करेंगे साथ में। इनको भी समझना बहुत जरूरी है, पर आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत बेसिक वाला करेंगे। सो दिस इज एसेंशियली डन टू कूल योर बॉडी। तो अगर आपको अपनी बॉडी में, जैसे आप जाते हैं कहीं एंड आपको ये मालूम पड़ता है आयुर्वेद में कि अगर आपके जो है अंदर की अग्नि बहुत ज्यादा भी है, मान लीजिए आपकी जो सोलर एनर्जी है, या फिर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, ऐसा कुछ कोई रीजन भी है, तो हम शीतली या शीतकारी इनमें से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन ये एडवांस प्राणायाम है, so it is very very important that you are in a very quiet environment, the air is good, the surrounding is supportive and you are in an आसन, आप आसना में बैठे हैं, आप सही जगह पे हैं, सही लोग रहते हैं और आपकी जो हवा है वो ठीक है, आप जो आसन है वहां पे ही आप बैठते हैं, आप ऐसे कोई अलग जगह पे ना बैठ के इसको रिस्पेक्ट करते हुए वहीं पे आपको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। So if you are seated in the right position, if you are in the right place, let's practice Shitkari with me. So this will be done for about 10 rounds. इसके लिए आप अपनी जीभ को अपने तलवे पे लगाएंगे। You will be putting your tongue towards your palate near your teeth, back ahead of the teeth, and there you will inhale and then exhale from nose. This keeps going on for 10 rounds. There is no retention right now. Otherwise, there is retention while you inhale and it can be after your exhalation as well. Again, अगर हमें रिटेंशन के साथ करना है, फिलहाल हम कोई रिटेंशन के साथ नहीं कर रहे। मान लीजिए आप इनहेलेशन के बाद की रिटेंशन की बात करते हैं, एक्सहेलेशन के बाद की रिटेंशन की बात करते हैं, ये सब कुछ एडवांस में आता है और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अनुलोम विलोम में भी जो अलग अलग काउंटिंग है ना, उसमें आप अपनी 8, वो जो हमारी 8 की इनहेलेशन रहती है और हमारी 32 सेकेंड या 16 सेकेंड की जो रिटेंशन रहती है, या हमारी 20 सेकेंड्स की मान लीजिए इतनी एक्सेस जो हमारी रिटेंशन रहती है, जब हम वो कर पाते हैं तभी हम ये सब कर पाएंगे। लेवल ही ये है, हम इसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो हम जब पहले उसे ठीक से कर लेंगे तब हम ये इसे प्रैक्टिस करेंगे। सो फॉर नाउ वी विल बी गोइंग ओनली फॉर विदाउट रिटेंशन शीतकारी। आप मेरे साथ में या फिर अपनी ही लेवल पे इसे काउंट भी कर सकते हैं। हम 10 राउंड्स लेंगे इसके। यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन क्लोज योर आईज ऑल्सो। First, just normal breathing, inhalation and exhalation. And now we will be going for the first round and we will continue till the 10th. Our last round, and then you can breathe normally. Purifies your blood and your circulation, your body and your air. It cleanses and cools your body. It also quenches thirst
and helps your body calm down. So you should only do these आसन अगर हमें पता है कि हमारे को कूलिंग डाउन ऑफ आवर बॉडी ऐसा कुछ रिक्वायर्ड है. अगेन कोई भी चीज हम जब करते हैं, मान लीजिए हमने कूलिंग कुछ किया, उसके बाद एक हीटिंग जो है कोई प्राणायाम या ऐसा कुछ आसन ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारी हीट और कूलिंग इफेक्ट दोनों बैलेंस हो सके. So that is important, and which is why all of these things should be done only under guidance and under that of teacher's guidance, right? तो उसको ही ध्यान रखते हुए आपको देखना चाहिए. बस अभी हम दिखाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इन सबको साथ में कर रहे हैं. अब हम करेंगे शीतली. So we will be rolling our tongue like this and breathing through the tongue and exhaling through the nose. So एक बार आप देख सकते हैं. इस तरीके से आप अंदर लेंगे और इस तरीके से आप बाहर छोड़ देंगे. ठीक है, ये भी हम 10 टाइम्स करेंगे. और यहाँ पे भी हम रिटेंशन नहीं रखते. अगेन रिटेंशन होता है पर हम तभी करेंगे जब हम लोगों ने बिगिनिंग के जो है स्टेजेस अच्छे से कर लिए हैं. अगर आप रिटेंशन कर सकते हैं देन इट गोज मिनिमम फॉर 15 सेकेंड्स. पहले आप इनहेलेशन के बाद में रिटेंशन करेंगे, फिर हम बाद में और एक्सहेलेशन की रिटेंशनिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अभी हम नॉर्मल रखेंगे, विच इज inhalation and exhalation through nose and inhalation through mouth, right? You can close your eyes and you can again do it at your pace, या फिर आप जो है मेरे साथ में काउंटिंग जैसे मैं करूंगी वैसा आप कर सकते हैं. Breathing normally. And we'll start with the first round. With our last round, you will relax, breathing normally. You can also lay down for a few breaths in Shavasana. Joining your feet together and coming from one side of the body. Chin be getting up. Hope you're feeling calmer. आप इससे अपने आप को शांत भी कर सकते हैं, and this is a very nice practice. So you can follow this, and I hope you can practice more. Thank you for joining, and you can look at our number and contact us, which is written below.
Thank you so much. Hope to see you again. Hari Om Tat Sat.